Good morning, everyone. We'll begin. We'll begin in just 2 minutes. May I now request our esteemed dignitaries seated among the audience to kindly come forward and take their places on the dais as we formally begin the inaugural session of this international conference. I respectfully invite Professor Narayan Lal Gupta, our chief guest, Shri Gopal Sen, our guest of honor, Professor Sudhir Kumar, our distinguished keynote speaker, Professor Alpana Kateja, the Honorable Vice Chancellor of the University of Rajasthan, and Professor Deepa S.P. Mathur, the Head and Convener of the Department of English, University of Rajasthan, to kindly grace the dais. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished guest with a warm round of applause. A very warm good morning to one and all. With great pleasure and honor, I, Niharika Soni, the compere of this session, welcome you all to the International Conference on Indian Knowledge System Perspective Imperatives, being organized by the Department of English, University of Rajasthan on 23rd and 24th January 2026. This conference brings together scholars and thinkers from diverse disciplines to engage with the rich intellectual traditions of the Indian knowledge system while also exploring its relevance, reinterpretation, and application in contemporary academic and global contexts. The objective of this conference is to create a meaningful platform for dialogue, critical inquiry, and interdisciplinary exchange, encouraging us to revisit indigenous knowledge frameworks and examine their perspectives and imperatives in the modern world. We are truly honored by the presence of our esteemed guest, distinguished speaker, the delegates whose participation adds immense academic value and global relevance to this conference and all the participants and audience. On behalf of the organizing committee, I extend a heartfelt welcome to all of you and thank you for being a part of this scholarly endeavor. This morning holds a very special significance to all of us. Today, as we gather for this scholarly engagement, we are also commemorating the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, one of the most inspiring architects of India's struggle for freedom, whose life exemplified courage, intellectual conviction, and uncompromising commitment to national self respect. So Netaji's birth ceremony is being celebrated by us today as Parakram Divas. At the same time, today also marks the auspicious occasion of Vasant Panchami, a day dedicated to Goddess Saraswati, the eternal source of knowledge, wisdom, creativity, and learning. The confluence of Netaji and Vasant Panchami leads to the deeper symbolic meaning of this conference, reminding us that intellectual inquiry and national consciousness have always gone hand in hand in Indian knowledge system. It is therefore most fitting that our international conference on the Indian knowledge system begins on such a day, with remembrance, reflection, and renewal come together in spirit and purpose. To commence this inaugural ceremony on an auspicious and reverent note, I now invite our respected dignitaries
to kindly proceed to the lighting of the ceremonial lamp, accompanied by the Saraswati Vandana, invoking the blessings of Goddess Saraswati of wisdom, knowledge, and enlightenment. My respectfully request Shri Gopal Saini, our guest of honor, Professor Narayan Lal Gupta, our chief guest, Professor Sudhir Kumar, our keynote speaker, Professor Alpana Katija, the Honorable Vice Chancellor, and Professor Deepa S.P. Mathur to kindly participate in the ceremony. Thank you so much. You may kindly be seated. To further mark the solemn beginning of this inaugural session, we shall now have the University Kulgeet, which reflects the rich heritage, values, and academic spirit of the University of Rajasthan. I request everyone present here to kindly stand up and join us in listening to the Kulgeet with due respect. धर्म प्रतिष्ठा अखिल विश्व की यह घोष हमारा, जले चेतना दीप यही पर दौड़त मिलती धारा। धर्म क्षेत्र यह आदर्शों का संस्कृति का सूर्योदय, ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। की सौरभ को दिश दिश में फैलाए, कर्मठ तन में निर्मल मन का नवोलोक गाए। शांतुला की नगरी की है इसका ब्राह्मण निर्भय, ज्ञान सदन विज्ञान निकेतन जयति विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय।
Thank you, everyone. You may now kindly be seated. In keeping with the rich Indian tradition of hospitality and respect, we shall now extend a ceremonial welcome to our distinguished guest with a shrifle and a shawl symbolizing honor, gratitude, and reverence. I now request Professor Deepa S.P. Mathur, the head and the convener, to kindly extend the traditional welcome to Professor Narayan Lal Gupta, our esteemed chief guest, as a part of respect and appreciation. It is my thank you, ma'am. Thank you, sir. It is my pleasure to invite Dr. Aditi Kalra, the organizing secretary, to ceremonially welcome Shri Gopal Sen, our honorable guest of honor, in accordance with the gracious Indian custom. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I once again invite our head, Professor Deepa Mathur, to welcome Mrs. Jagdish Kaur Sen for her presence and embracing the international conference. Thank you, ma'am. We are honored to have you with us today. May I invite Dr. Arun Singh, the organizing secretary, to kindly come forward and welcome Professor Sudhir Kumar, our distinguished keynote speaker, in recognition for his invaluable academic contributions. Thank you, sir. I further request Professor Deepa S.P. Mathur to kindly extend the traditional welcome to Professor Alpana Katija, the Honorable Vice Chancellor of University of Rajasthan, whose visionary leadership continues to guide and inspire us. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite Professor Deepa S.P. Mathur, the convener and head of the Department of English, University of Rajasthan, Jaipur, to deliver the welcome address. Under her guidance, this conference brings together scholars to explore and celebrate the richness of Indian knowledge system. The stage is here. Thank you so much, Niharika. Respected dignitaries on the dais, honorable patron of this conference, distinguished chief guest, esteemed guest of honor, our eminent speakers and scholars, respected colleagues from academia, dear research scholars, students, paper presenters, volunteers, and participants joining us both offline and virtually. Ladies and gentlemen, I am Professor Deepa S.P. Mathur, head of the Department English and convener of this international conference. And it gives me immense pleasure and a deep sense of privilege to extend a very warm welcome to all of you
to this two-day international conference on Indian Knowledge System, Perspectives and Imperatives, organized by the Department of English, University of Rajasthan, Jaipur, on 23rd and 24th of January 2026. We begin today on an auspicious note with the invocation to Devi Saraswati and the lightening of the lamp, symbols of illumination, wisdom, and continuity. May this sacred beginning guide our deliberations, our dialogues, and our discoveries over the next 2 days. It is my honor to first and foremost extend a respectful and heartfelt welcome to our honorable patron, Professor Kalpana Kateja, Vice Chancellor, Ma'am, University of Rajasthan. Madam, your consistent encouragement of academic initiatives and your support for interdisciplinary and international engagement have played an important role in strengthening and innovating the academic environment of the University of Rajasthan. We are grateful for your guidance and patronage, which have enabled us to organize this international conference and bring together scholars from diverse intellectual backgrounds. I also extend a very warm welcome to our chief guest, Professor Narayan Lalji Gupta, President ABRSM. He is also a professor in the Department of Physics at Government College, Ajmer, a well-recognized personality whose presence today adds immense academic and institutional value to this occasion. We are honored by our gracious acceptance of the invitation and look forward to your insightful address. We are privileged to welcome our guest of honor, Shri Gopal Saini ji, a name that resonates far beyond the sporting world. A renowned Indian athlete, Olympian, and Arjun awardee. Sir Saini held the national record in the 3,000 meters steeplechase, a remarkable feat that remained unbeaten for 37 years. A two-time Asian Games silver medalist, he brought glory to the nation by securing podium finishes at Bangkok in 1978 and New Delhi in 1982. His journey exemplifies discipline, perseverance, and excellence, values that align seamlessly with the spirit of knowledge and endeavor we celebrate here today. We are also delighted to welcome Mrs. Jagdish Saini ji, wife of Gopal Saini ji, who accompanies him, and we thank you both for gracing this occasion. Additionally, I warmly welcome our keynote speaker, Professor Sudhir Kumar, the global personality from Punjab University, Chandigarh, whose scholarship and critical insights promise to set an enriching intellectual tone for the conference. We are equally honored to have with us eminent speakers whose presence elevates the academic structure of this gathering. Professor Balram Singh, University of Massachusetts, Dartmouth, Dr. Shama Kaul, acclaimed Kashmiri writer, Professor Sampat Singh Bhati, innovation expert, Siegwerk, Germany, Professor Rajdhar Mishra, Director Research, Sanskrit University, Jaipur, Professor Dushyant Tripathi, Dean Fine Arts, MDSU University, Ajmer. We deeply appreciate each one of you for sparing your valuable time and for contributing your scholarly voices to this collective academic pursuit. The theme of this conference, Indian Knowledge System, Perspectives and Imperatives, is both timely and deeply significant. Over the next 2 days, we come together to critically engage with the vast, diverse, and intellectually rich traditions that constitute the Indian knowledge system. As articulated in the concept note, Indian knowledge traditions embody holistic worldviews that integrate philosophy, science, ethics, aesthetics, ecology, governance, and pedagogy. In an era shaped by NEP 2020, global conversations on decolonization
and the search for alternative epistemologies. Revisiting IKS is not an act of nostalgia, but a scholarly imperative. The conference seeks not celebration without critique, but rigorous interdisciplinary dialogue, one that bridges past wisdom with present academic frameworks and future educational possibilities. This conference aspires to explore how Indian knowledge systems can meaningfully inform curricula, research methodologies, ethical frameworks, and societal consciousness in contemporary times. As we move forward, I'm confident that the deliberations over these 2 days will be intellectually stimulating, critically enriching, and institutionally impactful. I sincerely hope that this conference will emerge as a benchmark academic event in the Department of English. Before I conclude, I would like to offer a small preview of what lies ahead. Today, we shall also witness the release of the current issue of our departmental journal, RUSE, along with the proceedings of the previous international conference, marking another significant milestone in our department's academic journey. I wish all our speakers the very best for their sessions and all participants a rewarding and memorable academic experience. As Shakespeare reminds us, true wisdom needs no validation, and learning is not an ornament we carry, but a part of who we are. Wisdom and goodness to the while seem vile, and learning is but an adjunct to ourself. And where we are, our learning likewise is. May we leave here guided by both. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for those inspiring words and setting the perfect tone for our conference. We are truly grateful for your guidance and vision. It is my privilege to welcome our keynote speaker, Professor Sudhir Kumar from Punjab University, Chandigarh, to the inaugural session of this conference. Professor Sudhir Kumar is a distinguished scholar whose works has a great contribution to our conference as well as to the school, to the all the other educational institute. Professor Sudhir Kumar, a visiting professor, School of Language and Literature Humanities, Nalanda University, a retired professor of English, Dean Research, and founder director Research and Development Cell, Punjab University, Chandigarh. Gratitude, and we have a gratitude for his presence. He has graduated and completed MA from Agra University with 4 gold medals, served over 4 decades in teaching and research, specialized in Indian knowledge system, Indian literary theories, comparative literature, translation studies, and modern Indian thinkers. A member of multiple academic committees, including the Ministry of Social Justice of Government of India and Indian Policy Foundation, New Delhi. Awarded the K.K. Birla Foundation Fellowship on Comparative Literature, Gandhian Literary Theory, and has delivered 400 plus invited lectures and published 90 plus papers on Indian culture and literary thought. The key contribution include promoting interdisciplinary study of Bharatiya Janana Parampara, organizing winter schools on Indian knowledge systems, and translating seminal Hindu literature into English. Sir, the stage is yours. नमस्कार। प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So, with a great sense of humility and with a great sense of acknowledging my own errors in the very beginning of my this brief discourse, I
टेंडर माई अपॉलॉजीज। मैं पूरी, क्षमा जी बैठी हैं, मैं पूरी क्षमा प्रार्थना के साथ आज आपको कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। I would just like to offer you, by way of making a brief presentation, a few points which are related to the theme of this seminar in the presence of the distinguished panelists sitting on the dais, हमारी कुल आचार्य, हमारी कुल गुरु, हमारे विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अल्पना जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि आपने देखा होगा नारायण जी, और हमारे अर्जुन अवार्डी आपने देखा जो गोपाल जी हैं। केवल गोपाल जी को ही अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए। गोपाल और अर्जुन में जैसा साख्य भाव है, साख्य भाव है, तो एक आपने अर्जुन को बुला लिया। और जो आप्त दीपो भव है, जो दीपा है हमारी अंग्रेजी विभाग की, आप देखिए कि जब इस सब को आपने अर्थ, अगर पुरुषार्थ परक भारतीय ज्ञान परंपरा है तो आपकी जो कुल गुरु है वो उस अर्थ का ध्यान रख रही है। और उसी अर्थ का एक अर्थ होता है भौतिक अर्थ। तो एक बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री आपके मध्य में डैश में बैठा है, और पूरा संसार भारतीय ज्ञान परंपरा में एक क्रीड़ा है, एक लीला है उस परमेष्ठी की, उस परमेश्वर की। तो वो गोपाल जी उसको, उस क्रीड़ा को हमारे यहाँ संपूर्ण काव्य शास्त्र एक क्रीड़ा नायक है। अगर आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ें तो उन्होंने कहा कि ये काव्य क्या है, उन्होंने कहा काव्य क्रीड़ा है, क्रीड़ा है। यह शब्द और अर्थ की वह क्रीड़ा है जिस क्रीड़ा को मानव अपनी चेतना से नित्य नूतन नूतन रूपों में उस क्रीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो अर्जुन जी, सॉरी गोपाल जी, इन चीजों को, चाहे एक बहुत बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश को, राष्ट्र को सेवाएं दी हैं, वो हम लोगों के इस प्रकार के क्रीड़ा के अर्थों को न जानते हों, लेकिन उनकी उपस्थिति यह तो बताती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसमें ज्ञान को क्रीड़ा से संयुक्त किया गया है, जिसमें कि सबसे बड़ा खिलाड़ी हमारा या तो शिव है या कृष्ण है। यह संपूर्ण सृष्टि उस शिव और कृष्ण की लीला में समाहित है। इसलिए सबसे बड़ा जो क्रीड़ावान जो व्यक्ति हुआ वह अवतार के रूप में कृष्ण हुआ, और जो सबसे ज्यादा जिसने पूरी सृष्टि की क्रीड़ा की वह न ब्रह्मा थे न विष्णु थे, वह शिव थे। शिव से बड़ा क्रीड़ावान, जो सारे संसार की क्रीड़ाओं से परे रहते जो क्रीड़ा करता है वही शिव हो सकता है, वही इस विश्व का हलाहल पी सकता है। विश्व से मतलब ये जो वर्ल्ड से नहीं है, जो आप इस्तेमाल करते हैं ग्लोब, वर्ल्ड। मैं आपको इस व्याख्यान में बताऊंगा कि जिन प्रत्ययों, द काइंड ऑफ कंसेप्ट्स दैट ही यूज इन explaining, describing even the Indian knowledge system, the knowledge of Indian knowledge system, and the system of Indian knowledge system. They are all diabolically, when I say diabolically, demoniacally constructed for the consumption of the colonized minds of Indian intellectuals. भारत की प्रजा उनसे मुक्त है। ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मैं अपनी डिस्कोर्स में बताना चाहूंगा, व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज, कॉन्स्पिरेटोरियल स्ट्रेटजीज वेयर बाय अल्पना जी, अगर कुलगुरु सावधान न रहे, देन इंग्लिश और संस्कृत का मेल देखिए, अभारतीय विल बिकम अभारतीय, a Hindu would become a Hindu, a Rashtra would become a Rashtra, a Samaj, a living Samaj would become a Samaj. So between a Samajikata and Asamajikata, we have lost track of our Abharatiya. We have not reckoned that जो अभारतीय इंग्लिश का है ना, ए एंड द आर्टिकल यूज कर रहा हूं, बिकॉज वी हैव कंप्लीटली कन्वर्टेड दैट अभारतीय इनटू द कंपाउंड अभारतीय,
The Sanskrit and Hindi compound Abharatiya. Every Hindu has already been converted. When I say because we don't discuss our own pratyas, our own Bharatiyata with our own Kalabodh, Itihasabodh, Swabodh, and Shatrubodh. So, what is the point of calling yourselves endlessly international? कल्पना जी, क्या जरूरत है? विश्व, सारे विश्व में भारत है जहां यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय. Whether at any point of time, Oxford, Cambridge, Yale, Harvard called themselves international universities. This is the sign of the colonized minds, heavily colonized and blocked minds. That's why मेरा पहला स्वर यह है कि अपने अंदर की आलोचना करिए. अगर आलोचना करनी, and आलोचना is not condemnation or destructive criticism. आलोचना in the sense of आनंदवर्धन. आलोचना means लोचन करिए, सम्यक दृष्टि लाइए. इसलिए मैं क्रेडिट देना चाहता हूं दीपा माथुर और हमारा यंग संयोजक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे अरुण, जिन्होंने imperatives and perspectives, भारतीय ज्ञान परंपरा, Indian knowledge system. Indian knowledge system, all right, but Indian knowledge system presupposes perspectives which are constructive as well as destructive. And with each constructive or affirmative perspective, and mark my words, there are constructive as well as destructive perspectives. In other words, in the words of the Bhagavad Gita, if you have a sattvic, Rajasic and Tamasic Jnana Parampara of Bharat, then what is happening even at the level, even at the apex level, NCRT, UGC, and all our prakalpas, that the Sattvic Jnana is being offered through the Tamasic perspectives. Are you getting me? And these Tamasic perspectives are trying to use those imperatives which appear to be, which are camouflaged, they are tamasic perspectives and the imperatives are very sattvic. कल्पना जी आप समझ रहे हैं? जैसे एक अर्थशास्त्री है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट it's a very sattvic rajasic concept of vikas, but this valueless economic development, this development which is a rajasic sattvic concept, would itself evolve the imperatives which are destructive, which are tamasic. So your entire development strategy would be suicidal, would be contrary to the about. So my point is that the very choice of this subtitle, that is whose imperatives and whose perspectives. I was made the coordinator of Kshamaji, Ek Bharat Shreshth Bharat, and I was sent this 51 units on Bhakti tradition. भारतीय ज्ञान परंपरा, भक्ति हमारे यहाँ रस बनाया गया. Bhakti, only in India, bhakti is not devotion. Bhakti has a vimarsha. It's a profound. There is no other country in the world which has these three coordinates of human consciousness, that is jnana, karma, and bhakti, interwoven into one seamless whole. Only India offers this kind of seamless connectivity between jnana, karma, and bhakti. And remember, those 51 units, when I read them, I immediately sent it to the Ministry of Culture. I immediately sent it to the Ministry of Education. Stop it, because it said that India could, because India is basically, mark my words, Shamaji, Brahmin, and this is coming straight from the government of India. India is basically patriarchal against women. India is basically Brahmanical and against Dalits and Shudras. India is basically anti-human society. Look, these are the units which were written not by the so-called Marxist, leftist, Congress combined governments. These were being written by those Marxist-oriented, those scholars who were trained in that kind of culturally materialist, leftist perspectives on knowledge. They have their own perspectives and they have their own imperatives. Mind you, we have to be alert
as a Kulguru, Alpna ji is with me. As a Kulguru, we have to be alert. Which kinds of perspectives on Jnana we have carefully chosen. We are committed to those kinds of perspectives which will empower, which will create India-centric, which will create Dharma-centric, Purushartha-oriented templates of different disciplines. And the young graduates should be inspired, motivated by their young acharyas, to distinguish between, ये जो विवेक है, जो distinguish between the India-centric, Dharma-centric, Purushartha-oriented, discourse of knowledge. That's why I say that Bharatiya Gyan Parampara, Indian knowledge system, has an overarching perspective, and that perspective is the perspective of Dharma. Now, Dharma has more than 60 meanings, 67 meanings. Dharma is never religion. Dharma is never and can never be religion. Dhyan rahe. So those enabling meanings of Dharma, where Dharma becomes the essence, Dharma becomes achar, where Dharma becomes duty, where Dharma becomes that quintessential component, as a physicist, Professor Narayan Gupta, that the Dharma of an atom is the Dharma of the particles. And the Dharma of the particles is still further, that the particles behave in a particular fashion, which is their Dharma. That the atoms of calcium behave differently from the atoms of sodium. And that is why NaCl, the combined, that is why the atoms and molecules of hydrogen and oxygen combine because of their dharma, that H2O comes into being. Look at the primacy of dharma at the level of, say, deep physics and quantum physics. When there was a conversation between Einstein and मैं गुप्ता जी से पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ, Einstein and Rabindranath Tagore. This happened in 1931, and it has been recorded. There was a table in the hall, and Einstein said that, let us have a samvad on reality. Then Einstein said that whether this table is reality, which is the function of my sensory self, which is the function of my sensory organs, or this table is reality, is an object as reality, or it is reality in a different metaphysical transcendental sense, as Indians use a metaphysical transcendental notion of reality and self. Then Rabindranath Tagore said that to you this is the object that is reality. देखो बेसिक ज्ञान परंपरा में फर्क है, basic. But for us, it is this consciousness, this chetana, this chiti. It is this chetana, this consciousness forms that reality. It is this consciousness where reality or vastu appears as vastu. Vas means to live. Vas means to exist. What is the existence of existence? We are more concerned about that. Therefore, to us, the vas, the existence of the table, does not lie itself in the table, but the tableness of the table is conceptualized. That's why the basic difference between the Abrahamic knowledge systems, the Majhabi knowledge, that is the Semitic, including Christian and Islamic knowledge, they are also the knowledge systems. As I said, that I got those units cancelled because they were written primarily from the church-centric, Abrahamic, that is Semitic, in a kind of social, because they said, because those units also propounded that bhakti is possible in India. Narayanji, Suniya, bhakti is possible in India because India came into contact with church and Islam. These are the liberating influences on the culture and society of India. तो मुझे याद आ रहा है कुछ, मैं आज उन लाइन्स को कहना चाहता हूँ. आज बसंत पंचमी, आपने माँ सरस्वती का स्मरण किया. माँ सरस्वती के पूरी उस वंदना में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो उसकी अंतिम उस श्लोक में है, सा माम पातु सरस्वती, हे सरस्वती माँ मेरी रक्षा करो. जाड्यान दे पारा कहा,
मेरी उस सारी जड़ता को दूर करो। अगर मेरी मां सरस्वती अल्पना जी के रूप में बैठी है, इस विश्वविद्यालय की सरस्वती है वो, और अगर उसके रहते इस विश्वविद्यालय में जड़ता रहती है, और सामाम पात सरस्वती अल्पना जी, अगर सा विद्या या विमुक्त है, ये विद्या की अधिष्ठात्री बैठी है हमारे पास। सबसे बड़ा पनिशमेंट हमारे यहाँ होता था, जो राजा होता था। अब आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे, हाउ सिस्टमेटिकली वी वर डी हिंदुआइज्ड, डी इंडियनाइज्ड, डी संस्कृताइज्ड थ्रू अवर एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते थे, अब भी कहते हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने लगे। Until or unless you explore the true arthas of those shabdas, those pratyayas which are your own, you would allow yourself to be parasitically interlinked, parasitically dependent on those Euro-Americocentric arthas or meanings that will not decolonize, recolonize your minds, that will systematically de-Indianize and de-Hinduize you. Mind you, ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत में शिक्षा के नाम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कीवर्ड है, जो सरस्वती है वही दुर्गा है, वही चंडी है, वही चामुंडा है। आप देखिए ना, वही ऋतंभरा है, वही प्रज्ञा है, वही चिति है, वही चेतना। जरा 51 नेम्स ऑफ, जैसे आप सरस्वती कहते हैं, वो माँ दुर्गा भी है, वह चंडी भी हो सकती है। व्हाट इज नव, जब हम नव दुर्गा कहते हैं, नव दुर्गा, फिर 51 नेम्स, दुर्गा सप्तशती, 51 नेम्स, वो चिंता है, वो विद्या है, वह अविद्या भी है। अकेली भारतीय सिविलाइजेशन दैट सेज इन दिस हैंड वी हैव विद्या एंड इन दिस हैंड वी हैव अविद्या। अब विद्यायाम, ध्यान रहे, अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा, मैं अपनी अविद्या से, थ्रू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, आई विल क्रॉस ओवर डेथ। मैं इस सारे संसार के ताप को, ऑल दीज वर्ल्डली सफरिंग्स, आई विल क्रॉस ओवर थ्रू अविद्या। दैट इज, बैठे हुए हैं आचार्य, द मटेरियल साइंसेस। अविद्या इज नॉट इग्नोरेंस, अविद्या इज those material worldly sciences, knowledges which come to us from all sides. We have to have our mastery over those avidya centric knowledge systems. ठीक? But even when you conquer death, you do not become immortal. अमृतत्व नहीं मिलेगा। अमृतत्व is आनंद। तो वो कहते हैं अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। You will become deathless. There will be no trace of death. Because avidya, look at the advancements made in the realm of science and technology, medical sciences, all kinds of sciences, economic science. Economics is called economic science. Literature is called literary science in the West. It's a kind of scientism which has been prevailing in the West. But ultimately, amritam ashnute. So, vidya ke pursuit se, I would acquire that amritatva, that deathlessness, that kind of amritatva, that anand, that paramarth। ध्यान रहे, शब्द, अर्थ, और अर्थ के बाद जो सबसे बड़ा अर्थ होता है वो परमार्थ है। तो भारत की ज्ञान परंपरा में न केवल शब्द और अर्थ, ध्यान रहे, और शब्द वर्ड नहीं है, अर्थ मीनिंग नहीं है। मैं आपसे, अर्थ के 40 अर्थ हैं, जैसे धर्म के 67 अर्थ हैं। अर्थ का कुछ अर्थ आपको, अर्थ का मतलब कल्याण, अर्थ का मतलब प्रयोजन, अर्थ का मतलब उद्देश्य, अर्थ का मतलब इयत्ता, इजनेस, आपका होना ही आपका अर्थ है। और जब आपको होने ही नहीं दिया गया, सामने हमारी ऋषिका बैठी हैं क्षमा जी, उनके होते हुए ये उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि एक कश्मीरी हिंदू को होने ही नहीं दिया गया, राजनीतिक रूप से उसका होना नहीं स्वीकार्य है। ध्यान रहे, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान की दृष्टि से अद्भुत योगदान है कश्मीर का, लेकिन राजनीतिक रूप से उस कश्मीरी हिंदू को होने ही नहीं दिया गया। इयत्ता, उसके अर्थों का अन्वेषण आपकी इतिहास की किताबों में नहीं, खारिज किया गया। लोग, आपका ही ज्ञान, आपका ही इतिहास आपके ज्ञान से खारिज हुआ।
किसने किया? Not the jihadis, not the what the Congress left combined did in their ruling dispensation for 65 or 60 years. We should not no longer cry over them. We should no longer cry over what Macaulay did to us. What Macaulay did to us, he was performing his adharma as dharma. Full credit to Macaulay. Full credit. In just 3-page document, Professor Kapil Kapoor ji, उन्हीं की परंपरा के हम लोग हैं. हम लोग कपिल कपूर संप्रदायवादी हैं. अगर संप्रदाय होना बहुत अच्छी बात है, बिना संप्रदाय के कैसे बोल सकते हैं हम, है ना? वो सांप्रदायिक नहीं है. जैसे आपने कम्युनल का, आप हर चीज का पर्यायवाची ढूंढते हैं इंग्लिश, और बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र कैन नेवर बी इकोनॉमिक्स ओनली. Earth can never be economy only. The moment Earth becomes economy, the society is heading towards disaster. The problem of the West is Earth is only vikas, Earth is only economy. In India, this is the sign of our Shivatva, our collective Kalyana, because Earth without dharma, चाणक्य नहीं थी. उन्होंने कहा जीवन का आधार क्या, धर्म का आधार क्या? उन्होंने कहा धर्म का आधार तो अर्थ है. चाणक्य रिवर्सेस. चाणक्य says without earth, but this earth is not only economy. That's why I say, what is the earth of earth? तो आप मीनिंग्स की तरफ जाइए जिसके लिए आपको सिद्ध आचार्यों की आवश्यकता है. काम क्या है? पूरा नॉलेज सिस्टम हमारा अर्थ और काम के इंटरप्ले पे है. अर्थ और काम. व्हाट इज कामना? इज कामना सेक्स? इज कामना जेंडर? आप जरा यूजीसी के डायरेक्टिव्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स देखिए. काम को क्या परिभाषित किया है उन्होंने? कहा जेंडर, लिंग इज ए फंक्शन ऑफ द माइंड. लुक, सबसे बड़ा, दिस इज द परवर्टेड पेडागोजी अल्पना जी, whereby you are issuing that equity centric. Equity is the concept in the West. Narayan ji, equity, equality. French Revolution, प्रोफेसर भार्गव जी बैठी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, दे प्रोड्यूस्ड a dictator in the forms of Napoleon Bonaparte. French Revolution, the birth, the genesis of liberal democracy is said to be, is said to have begun from French Revolution. आपने वहां से प्रत्यय लिए liberty, fraternity, equality and justice, and you put them in the preamble of the Constitution of India. है ना? क्या वो Constitution of India कितना इंडियन है आपने सोचा? जिसको आपको सोवरेन कहना पड़ा, सोशलिस्ट कहना पड़ा, सेकुलर कहना पड़ा. हमें शर्म आनी चाहिए. हम कौन सी ज्ञान परंपरा की वकालत कर रहे हैं? आर वी द मियर कॉलोनीज ऑफ यूरोप? सो यू हैव टू बोरो दोज कंसेप्ट्स एंड पुट देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर इन यूरोप. सून आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द कॉलोनियल इकोनॉमी, पूरा सिस्टम वाज द कॉलोनाइज्ड. द फर्स्ट पूरी global economy is the best example of the colonial and colonized economic system. How they created their Louvre museums, how they created that industrial revolution in the West. It is through their knowledge system. It is through that knowledge system which was imposed, grafted on the colonized minds like us. Full credit to Macaulay. But who stopped us from subscribing, following Macaulay after 1947? मेरा प्रश्न ये है. हमें अपना स्वबोध, स्वराज बोध नहीं होने दिया गया, क्योंकि ना हमें पुरुषार्थ पढ़ाया गया. पूरी ज्ञान परंपरा पुरुषार्थ पर टिकी हुई है, और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो धर्म केंद्रित है. देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिसिप्लिन वाइज, विषय वस्तु वाइज, बट दोज पर्सपेक्टिव्स all these scholars would discuss through their different disciplinary projections. Mind you, they are not the overarching perspectives on the entire Jnana Parampara. Just मैंने आपको बताया, if you are working in the Abrahamic system, then the centrality of church or jihadi mindset, theological mindset, theological political structure, theological religious structure, even the concept of mathematics is church-centric. I will request Professor Alpana ji to invite Professor C.K. Raju, an eminent Ganitagya. He does not call himself mathematician, because the very concept of mathematics, which is the most empirical of sciences in the Western world, is itself church-oriented.
Mathematics means soul. Mathos comes from soul. How Vatican created those disciplines of mathematics, perpetuating mathematics, and how Indian mathematicians, नारायण जी बैठे, उनको पता होगा कि कैसे भारत की गणित की परंपरा, जिसमें नंबर सिस्टम गिवन बाय भारतीय मैथमेटिशियंस, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, है ना, फिर मध्वाचार्य स्कूल ऑफ केरल मैथमेटिशियंस, you derive your calculus, है ना. Calculus was not given by Newton and Leibniz. They have now accepted that, sir, thousands of years before Newton and Leibniz, calculus came from India, from Kerala, the school of Madhvacharya. मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता कि the first implements of surgery, we don't have a charak or shushruta at AIMS or at any medical college, but go to Canberra, Australia, they have the father of modern medical sciences and surgery, Shushruta and Charak. They call, you do not have the, when I say Bharatiya Gyan Parampara remains totally north-centric in the minds and hearts of the scholars situated in North Indian universities. They do not talk of the Cheras, the Pandyas, the Cholas, the Hoysalas, है ना, the Pallavas. Look at the massive contribution made by Tulkapiyam, Tirukkural, Silapadikaram, Manimekhalai. Your entire knowledge system, which you call Indian, remains highly, again, localized. So you do not discuss as to how the Akam and Puram, they get resolved in and through the aesthetic Advaita in Tulkapiyam. How the entire Rasa Shastra, which is there in the Bharat Muni's Natya Shastram, at the same time, the same Rasa Shastra gets a resonance in the heart of Tulkapiya, a South Indian. Bhama, the greatest aesthetician from Kashmir, Bhama was writing on Kavyalankara, that how to create newer and newer meanings with more and more kinds of combinations of words called Alankara. Now, again, you have Dandi in Andhra Pradesh. Look at the kind of connectivity that Bharat Muni's Natya Shastra, Abhinav Gupta's 42 texts, their Pandulipis, their manuscripts were only found in Trivandrum, Kerala. What was the connectivity? How the Shabda, your own concepts could travel when there was no means of communication, Narayanji. I want my answers from those managers of Bharatiya Shiksha and the managers of Bharatiya Shiksha Parampara now, who give so much of weightage to Bharatiya Indian knowledge system, that where is that connectivity now? How many of our departments have those pedagogic and research, curricula, which is based on that our perception that of what? Of an all India, Akhila Bharatiya consciousness, where Shankaradev was writing, was historicizing. Historicizing means he was recording, inscribing that Vimarsha Mandap, where all the people belonging to the so-called lower caste, आपने caste कहते हैं, हम कहते हैं हमारी जाति परंपरा के, सब लोग आके एक विमर्श मंडप पे आते थे. How Chola's local self-administration, look at the Uttar Merur inscription. All the people belonging to society, to all sections of society, they would come together to discuss their problems democratically in the Vimarsh Mandap. What was the Samiti and Sabha of Vedic? That doesn't mean I want you to hark back to the ancient past and only the pastness of past, as Eliot would say. Our present is imprisoned into the pastness of past. No, the pastness of past necessitates the relevance of that pastness in our present, leading towards a possible future. So, anyway, your future is inscribed. Your future is anticipated, in the notion of your past. So Hitler contained that future for humanity, remember, because the pastness of anti-Semitism, अभी मैडम ने नाम लिया कि शेक्सपियर के टाइम में कितना बड़ा नॉलेज और विजडम थी. शेक्सपियर के टाइम भी जो ज्यूज के प्रति हेट्रेड थी, सिर्फ दो समाजों में ज्यूज के प्रति हेट्रेड थी, एक क्रिश्चियन और एक इस्लाम.
They were Kafirs. Kafirs. And third one was the Hindu community. Just see as to how much of this kind of hatred was there in the so-called enlightening and enabling vimarshas of the so-called developed West. क्या इस प्रकार की कालिदास में है, बाण में है, भारवी में है, भास में है? Mind you, the early works of Sanskrit were written in Prakrit, Pali, as well as Paishachi, है ना, and Sanskrit. The same writer was writing like Rajashekar, like Shemendra, पूरा 6वीं शताब्दी एडी से लेकर, और आप अगर चलें 12वीं शताब्दी तक का जो कश्मीर है वो आपकी ज्ञान परंपरा का केंद्र है, और उसमें every writer was writing in Sanskrit as well as in Prakrit and as well as Pali, because it was a center of Buddhism as well as Jainism. But you were told through our own Acharya like G.N. Devi, Citizens Under Siege, 2000 essays from 2014 to 2015. G.N. Devi, the nativist critic, G.N. Devi, Ganesh Narayan Devi, और अंग्रेजी विभाग तो उनसे परिचित होगा, कितना बड़ा राइटर है, और वो कह रहा है कि दिस इंडिया इज अंडर सीज ओनली विद इफेक्ट फ्रॉम 2014. उससे पहले तो लिबरेटेड इंडिया था. Only with the coming of the BJP at the center, India is now under siege. Look at the collection of 42 essays in the book published in 2025. On the other hand, what is the Puru Paksha of the need to recognize, to have that vivek between the perspectives, to see that if jnana is sattvic, tamasic, and rajasic, we have to have that vivek buddhi so that योर जातीय स्मृति, एंड अगेन आपसे प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर जातीय स्मृति में ब्राह्मण हूं मैं, योर जातीय स्मृति इज योर एसेंशियल कॉन्शियसनेस टू बिलोंग टू इंडिया. जो उस भारत की भारतीयता है उसको उससे आप किस प्रकार से उसको बिलोंग करते हो, दैट इज योर जाति. जाति का मूल अर्थ, मैंने कभी 1-2 घंटे का व्याख्यान मेरा जाति पे ही हुआ था, एंड हाउ डेंजरस द नोशन ऑफ कास्ट which was grafted onto the, it is a fairly recent began. So with the coming of the Britishers, they created a kind of confusion. स्मृति विभ्रम किया, और स्मृति विभ्रम से स्मृति नाश हुआ, और स्मृति नाश से समाज. स्मृति भ्रंशात प्रणश्यति, भगवत गीता 6th चैप्टर. आपकी स्मृति का नाश कर दिया. जिस दिन आपसे कहा कि ये शेड्यूल ट्राइब है, माफ करें मेरे कुछ मित्र यहां होंगे, मैं उस पूरी कास्ट सिस्टम का जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसके विरुद्ध हूं, और मैं उन्हीं आचार्यों को प्रश्नांकित मेरे यहाँ थी, मेरे यहाँ थी, इनको माइक बंद दे दी. ये अपन नहीं कर सकते, कोई करेंगे.
Is it audible? इस टर्म लिटरेचर के खिलाफ मैं बच्चों से कहना चाहता हूं 2011 का कंपैरेटिव लिटरेचर का वॉल्यूम उपलब्ध है दीपा जी, काइंडली सर्कुलेट दैट वॉल्यूम ऑफ comparative literature 2011. There is a 40-page long conversation between David Damrosch and Gayatri Chakravarti Spivak. They emphatically say, ध्यान रहे, there is no literature that can possibly be used. The term, the notion of literature cannot be used to characterize Bharati Kavya and Sahitya. वो कहते हैं time is up for derecognizing the concept of literature and culture itself, because the notion of literature goes with the concept of culture, and both are mediated through the primacy of materiality of existence to the extent that they say your pursuit of literary studies would eventually make you, ध्यान रहे मेरे वर्ड्स नहीं, गायत्री स्पिवक और जो आपके बड़े पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स हैं, डेविड डेमरॉश, दे विल मेक यू, ध्यान रहे, culturally deracinated. If you go overboard into accepting everything that is coming from the West in the name of literature, culture, and nation, you would become, they say, now they are saying, we have been saying this for time immemorial. We were called rightists, we were called sanghis, we were called the propagandists of dharmic discourse. But now the same Marxist, ultra-Marxist critics, now they are coming to the conclusion that time has come not to use the literature for literary studies, culture for cultural studies, and there is no such viability of the term called. अब आपको वो कहते हैं time has come up, so you will become culturally deracinated and philologically bankrupt. बहुत बड़ी चेतावनी है. आज किसी भी साहित्य के स्टूडेंट से पूछिए, हाँ भाई व्हाट इज लिटरेचर, तो वो बताएगा शायद सार्थ पढ़ लिया. व्हाट इज साहित्य, कुछ नहीं पढ़ा. व्हाट इज काव्य, कुछ नहीं पढ़ा, है ना. ये जो अमनीजिया है, दिस काइंड ऑफ अमनीजिया दैट हैज बीन अगेन एज आई से, ये इम्प्लांट किया गया है आपके उस बच्चे के उसमें, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस हाउ अ भारतीय वुड बिकम अ भारतीय. समझ में आया ना. हाउ अ हिंदू would become a Hindu. So Kashmir is normal. Tourist कितने जी, 5 करोड़ टूरिस्ट आए थे आपके यहाँ. So it's normal. What is happening to Kashmir? Nothing. So if Pahalgam massacre happens, nothing. No, there is something awfully wrong in your Jnana Parampara. There is something wrong the way you have institutionalized this knowledge system. तो मैं आपसे कह रहा था कि जब गायत्री स्पिवाक ने कहा only Sahitya is the term, an arch Marxist, Narayan ji, even the guru of Naxals, now they say, no, time is up, and let us now come back to the notion of Sahitya. कुछ तो दम होगी इस कंसेप्ट में. पढ़िए साहित्य को, लेकिन आपने नहीं पढ़ा. गुरुदेव टैगोर ने 1882 से लेकर और 1940s तक there were 9 essays written on the notion of साहित्य. मैं भामा से लेकर और पंडित राव जगन्नाथ तक की यात्रा नहीं आपको ले जाना चाहता कि कैसे भारत में साहित्य और काव्य को हमारे यहाँ कहा गया, काव्य वह है जो सुप्रीम पावर, सुप्रीम अर्थ, जो अर्थ सुप्रीम होते हैं, परमार्थ की ओर आपको ले जाता है. लेकिन साहित्य को फेमिनिन कैटेगरी में रखा. किस कैटेगरी में रखा? एक स्त्री लिंग की कैटेगरी में. ध्यान रहे, फेमिनिन का अर्थ या स्त्री लिंग का मतलब स्त्री होना नहीं होता है. उन्होंने कहा साहित्य विद्या होगी लोकधर्मी, बिकॉज काव्य would take you towards those paramarthik satta, whereas साहित्य काव्य पुरुष होगा और साहित्य विद्या उसकी वधु होगी. राजशेखर, 10th 11th century. आप समझे, उन्होंने कहा it is through साहित्य that knowledge which is only meant for the scholars, remember, that
can only be disseminated in the public domain democratically through Sahitya. 6th century AD. Bhartrahari, the same writer who is writing Shringara Shatak, Niti Shatak, Vairagya Shatak, भर्तृहरि वाक्यपदीयम। आप देखिए एक और बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ कि वाक्यपदीयम जैसा हमारे पास ग्रंथ था जिसको वेस्ट ने ट्रांसलेट किया, उन्होंने लिंग्विस्टिक्स बनाई, लिंग्विस्टिक टर्न बनाया, है ना। पाणिनि जैसा आपके पास मैथमेटिकल ग्रामेरियन है आपको, जिसकी के सुपर कंप्यूटर चलता है जिसके ऊपर, है ना। आपने, हम लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने विटगेनस्टाइन को तो पढ़ाया, लेकिन हमने विटगेनस्टाइन जिसको पढ़कर बड़ा हुआ, जिस पर उसने रिसर्च किया, he was a professor of Sanskrit, हमें नहीं बताया। So look at this, our own pitfalls, our own vulnerable points, जिसमें कि हमें इसका महिमा मंडन किया गया कि now we are becoming the largest pool of the skilled people। हमारे यहाँ स्किल को नॉलेज से अलग किया गया, है ना। और यह सबसे बड़ा अगर शिक्षा पद्धति का दोष है वह है कि नॉलेज के साथ इंटीग्रेशन नहीं हुआ, नॉलेज ज्ञान के साथ कौशल या दीक्षा का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तैत्तरीयोपनिषद दीक्षा शिक्षावल्ली, आप जरा दीक्षांत उपदेश पढ़िए। शिक्षा कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट स्किल, विदाउट दीक्षा। सो शिक्षा एंड कौशल, दे बोथ मेक, दे गो टुगेदर इनटू मेकिंग ए स्नातक। ध्यान रहे, स्नातक, स्नातक वो होता था जिसका शिक्षा भी होता था, दीक्षा भी होती थी। नाउ यू हैव मेड स्किल मिनिस्ट्री, ए सेपरेट डिवीजन ऑल टुगेदर। तो आपके यहाँ आपने वो एलियनेशन क्रिएट किया, आपने उसे शिल्पकार बनाया और उसको मकबूल फिदा हुसैन या नंदलाल बसु बनाया। सो ए नंदलाल बसु हु इज मेकिंग एन ए मकबूल फिदा हुसैन हु इज मेकिंग ओनली द इमेजेस ऑफ इमेजेस ऑफ इमेजेस, and they for their artifacts they get crores of rupees. Now a pitcher, a Kumar, an Alpana maker, the Madhubani painter, they get only a few hundred rupees. So my point is this alienation, this truncated notion of knowledge where जैसे मैंने आपसे कहा कि विद्या और अविद्या में भेद किया गया, क्योंकि आपके पास परा और अपरा जैसे दोनों डिस्कोर्सेज हैं जो दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। और उसी तरह शिल्प और विद्या, शिल्प और कला, ये भी हमसे अलग अलग कर लिया गया। और जब ये होगा देन यू विल स्टार्ट हेटिंग द आर्टिजन। आनंद कुमार स्वामी 1909 में उन्होंने ऐसे लिखा ऑन इंडियन एजुकेशन, उन्होंने कहा if the Indian education system continues to imitate the Western system of education, then all the examples of Indian art and Indian aesthetics would be contaminated, and there will be a kind of, as he said, a very destructive, a kind of consciousness which is destructive to Indian art itself. That is, there will be no room for Indian kala, Bharatiya kala or Bharatiya shilp, because Bharatiya kala cannot be, who created this Tanjore Brihadishwar temple? Who created Kailash temple of Ellora? Were they artists or artisans? My question is this. There was no difference between an artist and a shilpkar, जैसे आपने artisan कहा. Mind you, this is the gift from the West, that you accepted that these are the university-based scholars and these are the school teachers. Again, you created a hierarchy, in the fold of knowledge. This is a university professor and this is a college lecturer. Again, a hierarchy. And that is why one good feature about National Education Policy 2028, that this hierarchy intends to get broken, because most of the valuable publications, J.S.I. Deepak, Vikram Sampath, Sandeep Balakrishnan, and Sanjeev Sanyal, and so more of them, like if you talk of Kashmir, Agnishekharji, Kshama Kaul. Now, all these people are beyond the pale of university education or university systems. They are contributing to the reawakened recognition of India, while they are outside of our education system.
So can a Vikram Sampath as a university professor, can a Sandeep Balakrishnan as a university, can a person like J. Sai Deepak write like this on coloniality and decoloniality, as a university professor? No. University structures are still continuing with that stale template which was designed by the West oriented education system. ध्यान रहे, हमें NEP से एक उम्मीद है कि हम we will decolonize the university systems of education, और ये एक बहुत बड़ा प्रयास है. Therefore there is maximum resistance to भारतीय ज्ञान परंपरा by calling it as the Sanghi Jnana Parampara, by calling it as a kind of rightist Jnana Parampara. They are not ready to recognize that time is up when you could wrap your Anandavardhan, Abhinav Gupta, Kshemendra, Mammat, Mahim Bhatt, Acharya Bhama into the wrap of what? The ancient Indian discourse. Now, no longer we call our wisdom tradition as ancient knowledge tradition. This ancientness, this adjective called ancient, has now been done away with through NEP 2020. So credit should be given to this government. I was one of those 600, persons who were given this draft, which was more than 600 pages long. Acharya Kapil Kapoor ji was so he distributed 50 pages amongst us, Alpana ji. And then we condensed it into 70 pages. नहीं तो आप पर इतना भार पड़ना था कि 700 पेज पढ़ने पड़ते. तो इट वॉज रिटन, मैं नहीं जाना चाहता. अगेन देयर आर ट्रेसेस ऑफ अमेरिकनिज्म्स, है ना. सो दैट इज बाउंड टू बी व्हेन योर मूल टेक्स्ट इज रिटन इन इंग्लिश. मेरा हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, अगर इफ यू वांट टू सेंसिटाइज योर स्टूडेंट, use an Indian language itself, whether it is Hindi, Punjabi, Tamil, Telugu, any Indian language. Now the meanings of those terms or concepts, should be made available to the students or researchers as they are available in our own ज्ञान परंपरा, है ना. और उसके बाद you can have a संवाद with the western implications of those concepts. जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, मैंने अपनी कुलगुरु से कहा, मैंने कहा आप इस पर एक वर्कशॉप आयोजित करिए. हमारे षड दर्शन परंपरा है, दर्शन विभाग को बुलाएं, संस्कृत को विभाग, दे फंक्शन एज द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिलोसफी एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ संस्कृत. Whereas we have a joint family, हमारा एक संयुक्त परिवार जिसमें शोध की पद्धति अन्वीक्षिकी की पद्धति है. त्रयी वार्ता अन्वीक्षिकी. कौटिल्य कहता है बिना अन्वीक्षिकी के, बिना तर्क के, बिना न्याय के ज्ञान कैसा. इसलिए जो षड दर्शन है, यू कैन हैव द डिस्कोर्स ऑन लॉजिक, हाउ टू डिराइव मीनिंग्स लॉजिकली. न्याय दर्शन, व्हाट इज इंडियन कंसेप्ट ऑन रियलिटी. यहाँ फिजिसिस्ट बैठे, पूरा दर्शन वैशेषिक का, आपका न्याय वैशेषिक होता है, इधर लॉजिक है और इधर साइंटिफिक परसेप्शन ऑफ दैट विशेष, which makes a person, which makes an item, an atom, an entity विशेष. What is the relationship between the generality, that is the jati, samanya, and विशेष? This does not necessitate the belief in God, belief in church, belief in Allah or Khuda, belief in a guru. No, nothing at all. Look at that न्याय वैशेषिक सांख्य इंडियन स्कूल ऑफ रियलिज्म. आपकी मेथोडोलॉजी क्यों नहीं होती? और मेथोडोलॉजी क्या होती है? यू टॉक ऑफ इंपेरिसिज्म. द ओनली सिविलाइजेशन दैट कन्वर्टेड संख्या इनटू सांख्य. सांख्य का अर्थ ही संख्या होता है. सो हाउ आर दीज नंबर्स, how are these numbers in the world? The world can be encapsulated through numbers, but these numbers, उनकी परिभाषा तो जानिए कि संख्या का अर्थ क्या होता है, तब सांख्य का अर्थ आएगा. दैट अगेन इज ए स्कूल ऑफ साइंस. बिल्कुल मैं साइंटिफिक सेंस में बता रहा हूं, न्याय वैशेषिक सांख्य, देन माइंड साइंस, कॉन्शियसनेस. तो फिर योग और वेदांत. हमारे पास कितना बड़ा सिस्टम था, योग और वेदांत का सिस्टम था हमारे पास. आवर ओन रिसर्च मेथोडोलॉजी वाज फर्स्ट रिटन इन ऋग्वेद. मैं आपको बताना नहीं चाहता कि कितनी बार वहां वाद और संवाद की, वाद ही तो है लॉजिक, वाद ही मेथोडोलॉजी होता है. वाद इज नॉट आइडियोलॉजी, वाद इज नॉट इज्म. जो आपसे कहा जाता है कि हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स. नो, आपकी परेशानी हिंदुइज्म से है, हमें कोई लेना देना नहीं है हिंदुइज्म से. वी बिलीव इन हिंदुत्व बिकॉज हिंदुत्व इज द हिंदूनेस ऑफ बीइंग ए हिंदू. दिस इज अवर वाद, दिस इज अवर संवाद, without which we can't exist.
तो ये न्याय की, सांख्यिकी, वैशेषिक की, किसी और, इसके लिए हमारे यहाँ न्याय जैसे सबसे बड़ा है कि उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, डायरेक्ट परसेप्शन। नारायण जी से बड़ा न्यायविद यहाँ नहीं है कोई इस हॉल में, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता है फिजिक्स को। सबसे पहला सिद्धांती न्याय का प्रमाण पे है, प्रत्यक्ष है, उसमें प्रत्यक्ष है, फिर अनुमान है, ध्यान रहे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, फिर शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है आपके पास? पूरी साहित्य और संस्कृति की जो रिसर्च है वो शब्द प्रमाण पे आधारित है। इंपेरिकल रिसर्च जितनी है प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित है, डायरेक्ट परसेप्शन। उसके बाद संशय, डाउट करो, जो कुछ भी सोचो। वर्ल्ड की कोई मेथोडोलॉजी नहीं कि मार्क्सिस्ट कहते हैं सबसे पहले डोंट बिलीव इन मार्क्स, डोंट बिलीव इन आइंस्टाइन, व्हाट आइंस्टाइन सेज। नो, इंडिया इज द ओनली नॉलेज ट्रेडिशन, थॉट सिस्टम दैट सेज फर्स्ट लर्न टू डाउट व्हाट यू हियर। तो इसलिए कृष्ण की बात अर्जुन मानता नहीं है, ऐसे नहीं मानता है। आप यम और नचिकेता का संवाद, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद, ये वो संवाद हैं जिन संवादों में हमारे यहाँ गीता कितने बार कही गई, करीब 20 तरीके की तो गीताएं हैं, है ना। उन गीताओं में प्रश्न और उत्तर, प्रश्न के बाद प्रश्नाकुलता है, संशय है, संशय हमारे यहाँ तीसरा सबसे बड़ा हमारे यहाँ। उसके बाद प्रमेय, व्हाट इज टू बी नोन, प्रयोजन क्या है, जो से आपको, इफ योर प्रयोजन इज टू alter, transform, translate this Indian mind into the European mind or an Abrahamic mind, आपका प्रयोजन है, you will choose that methodology। जो आपके अंग्रेजी विभागों में, खासतौर से सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में, मैं आज आह्वान कर रहा हूं अपनी कुलगुरु चूंकि मेरे सामने है, कि कितने अर्थशास्त्र के विभागों में एक अर्थशास्त्र की नोशन जो भारतीय अर्थशास्त्र की दृष्टि है उसको रखकर रिसर्च की गई है, जबकि अब बहुत पुस्तकें उपलब्ध हैं भारतीय अर्थ दृष्टि पर। अब इतनी, दत्तोपंत ठेंगड़ी, एक उदाहरण दे रहा हूं, नारायण जी इससे परिचित होंगे, कितनों ने दत्तोपंत ठेंगड़ी का विमर्श, जो आधुनिक विमर्श है, जो हमने अर्थायाम पर, मैंने 15 दिन IIS शिमला में एक पूरा एक वर्कशॉप की थी मैंने, 15 दिन, और उस पर सब भौचक्के थे कि वहां पर उससे पहले दीनदयाल उपाध्याय और सावरकर के अर्थायाम पर कोई चर्चा नहीं हुई। हमने उसको केंद्र में लाई। ये भी दृष्टियां हैं, दृष्टियां सिर्फ अमर्त्य सेन के ही पास नहीं है, समझ में आया ना। इन दृष्टियों को आप आपकी इकोनॉमिक साइंसेज में, ऐसे ही जो जिन्हें आप डिपार्टमेंट्स ऑफ लिटरेचर, डिपार्टमेंट्स ऑफ, मुझे अगस्त पर बोलने के लिए अरुणाचल विश्वविद्यालय ने बुलाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी, तो मैंने कहा कि हम अगस्त को समझें। अगस्त के माध्यम से ही आपके पास वृक्षायुर्वेद आया। अगस्त ने सबसे पहले, कितना बड़ा ऋषि था, he wrote treatises on war, he wrote treatises on dharma, he wrote treatises on linguistics, he wrote treatises on ayurveda, he wrote treatises on economics, agriculture। क्या माइंड्स थे हमारे पास। अभिनव गुप्ता पादशाह है, 45 बुक्स अभिनव गुप्त जी ने लिखी। आपके पास इतनी विपुल ज्ञान संपदा, और वही कंटिन्यूटी हमारे पास आज भी लोक में है। लेकिन हमारा जो शास्त्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन यू डिस्कनेक्टेड दिस शास्त्र, दैट इज अवर यूनिवर्सिटी, दैट इज अवर सीट एंड साइट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च फ्रॉम द लोक, हम लोक धर्मी कम से कम होते गए। और ये क्षमा जी जानती हैं कि वाक्यपदियम में भर्तृहरि ने कहा और पाणिनि ने कहा कि शब्द का अर्थ लोक धर्मी होता है। द eventual touchstone is always लोक, है ना। उसके लिए आपको प्रगतिवादी होने की जरूरत नहीं है, जनवादी होने, हर नक्सलाइट जनवादी होता है, हर जिहादी कहता है कि दिस इज द डिस्कोर्स ऑफ पीस वेयर नो अपोजिशन इज पॉसिबल, ठीक है। व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ शांति, क्षमा जी आपको बताएंगी इनके काव्य में कौन सी शांति है जिससे ये डरती हैं। इनकी कविताएं पढ़िए, इनका दर्दपुर पढ़िए, ये कौन सा ज्ञान है जिसकी शांति से भयभीत हो उठता है। आज सारा विश्व भयभीत है एक शांति के डिस्कोर्स से। तो अजीब सी बात है, अगर वो वास्तव में शांति है तो इससे भयभीत होना क्यों। ये बड़ा कठोर, इस ज्ञान के वो पहलू हैं दे नीड टू बी एक्सप्लेन्ड टू अवर यंग माइंड्स विदाउट मैलिस। हिटलर के बारे में यूरोप में बताया जाता है विदाउट एनी मैलिस, बिकॉज what Hitler did to humanity is recorded history। इसलिए we have to read
वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस सिंड्रोम ऑफ नेगेशनिज्म कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये मंदिर गिर गए, पुराने थे गिर गए, इन स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, दिस इज द लेफ्टिस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इनसे जागने की आवश्यकता है, नहीं तो वी आर कंडेम्ड टू बी सेंसिटाइज्ड टू ट्रूथ थ्रू फिल्म्स ओनली, जो बारामूला ने सेंसिटाइज किया, बंगाल फाइल्स ने किया, कश्मीर फाइल्स ने किया, केरल स्टोरी ने किया। योर जेनोसाइड, योर जाति संहार इज बीइंग डिनाइड इन द डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें हम हैं। नो डिस्कोर्स ऑफ हिंदू जेनोसाइड इज एक्सेप्टेड इन द ज्ञान ऑफ मॉडर्न भारत। ये ध्यान रखें, आपका ज्ञान कैसा, जिसमें आपका विनाश यूरोप ने नहीं किया। यूरोप में 50 लाख ज्यूस का जो विनाश हुआ, दैट इज नॉट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ देयर हिस्ट्री। तो हमने अपने को डिहिस्टोरिसाइज किया, अहिस्टोरिसाइज किया। इन अदर सेंस वी वर एलियनेटेड फ्रॉम आवर ओन इतिहास, फ्रॉम आवर ओन आत्मबोध, स्वत्वबोध, जातिबोध, राष्ट्रबोध। तो इसलिए कभी भी दीनदयाल उपाध्याय, आनंद कुमार स्वामी और सावरकर, इनको आप अपने एकेडमिक पाठ्यक्रम में लाएंगे नहीं। और अगर इनको नहीं लाएंगे आधुनिक भारत के विमर्श में, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी आचार्य अभिनव गुप्त को, आचार्य आनंदवर्धन को, कुंटक को, क्षेमेंद्र को, जिसने कहा कि व्हाई शुड यू रीड व्हाट यू रीड, इट वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय क्षेमेंद्र इन 10th 11th सेंचुरी। ध्यान रहे, उसने कहा क्यों पढ़ें जो आपको पढ़ाया जाता है, उसका औचित्य क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी एंड रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ योर रीडिंग व्हाट यू आर टोल्ड टू रीड। तो उन्होंने कहा 27 फैक्टर्स हैं किसी भी टेक्स्ट के, वेदर इट इज रिटन इन हिब्रू, हिंदी, उर्दू, और 27 फैक्टर्स हैं, जरा पढ़िए उनको। तो बच्चे को जब पढ़ाया जाता है व्हाई शुड वी रीड ए टेक्स्ट ऑन इकोनॉमिक्स, क्या है वो, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, नेट क्लियर कर लेंगे, नहीं, केविंद्र के पास चाहिए। व्हाट इज द नीड to know the truths, those truths which are there in the domain of economics. Only then you can learn about the significance of economics. But once you accept those truths, I would say those discourses coming from the West and then poured over on your heads, and you are reading economic sciences and your papers are being published in the best journals of the world, mind you, you are brainwashed. You are a part of that brainwashed republic, as Neeraj Attri says, that your mind has been brainwashed and you stand as a university professor. इसलिए ये जो प्रोफेसर डम की जो कंसेप्ट है, इससे बाहर आइए, क्योंकि स्वतंत्र भारत, एक भारत का जो सही अर्थ जानना है तो लोक में जाइए, और लोक और विश्वविद्यालय के बीच में एक सेतु का काम मेरे बच्चे करें। और इसलिए मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, दो चीजों से मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा, कि जब आपसे हार जाता है कोई भारतीय, कोई, कि अब मेरा शास्त्र, मेरी ज्ञान परंपरा, आधुनिक ज्ञान परंपरा में यह कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये सत्य रिकॉर्ड नहीं कर रही, इफ इट इज नॉट सत्य परक, धर्म परक, व्हाट काइंड ऑफ ज्ञान परंपरा इज, तो वो कैसे उड़ता है। मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, क्षमा कौल जी का एक है, कश्मीर उन दिनों, ये कुछ दिनों बाद, मैं अपराध बोध के साथ कह रहा हूं, ये अंग्रेजी में भी आएगा, तो हो सकता है मेरे द्वारा आए। तो क्या कहती हैं, एक ऐसी भारतीय नागरिक कह रही है जो थक चुकी है एकेडमिक डिस्कोर्सेस से, जो थक चुकी है सत्ता में ज्ञान के विमर्श से, है ना, वो क्या कहती है, बिना रीढ़ की हड्डी का देश बन चुका है यह। मैं देख रहा हूं ना, किसी में देश की भावना नहीं, जातिवाद का नारकीय गर्क है, जातिवाद का नारकीय गरल है, विष है, पर राष्ट्रीयता का अमृत गायब, शूद्र से घृणा करेंगे, अपना सहधर्मी है, भाई है, एक ही संस्कृति है, और उसकी और हमारी, वह भारत का शत्रु तो नहीं, न शत्रु है हिंदू का, परंतु राजनीति ने ये भारत बोध मलिन कर दिया है, शूद्र को हिंदू का शत्रु बना दिया है। आप देखिए ना, जाति बोध आपका जाति नहीं है, आपकी कास्ट कॉन्शियसनेस में परिणति हो गई है, जो हमारी जातीयता बोध है। फिर कहती है कि क्षमा जी पात्र से कहलाती है, मैं देखता हूं कि यूपी में शूद्र मुझसे नफरत करता है, जानता है कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, वह मुझे ब्राह्मण मानता है, वही ब्राह्मण जिसने उसका शोषण किया। तो एक ब्राह्मण लिख रहा है और वो कह रहा है कि ये ब्राह्मणत्व
ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो क्या है, जैसे कश्मीर, जैसे कि कपिल कपूर जी कहते हैं कि पहले यह फैसला करो कि ये ब्रह्म है या ब्राह्मण है या ब्रह्म है, ये क्या है। जिसे ब्राह्मणिकल कहते हैं, क्या वह एडजेक्टिव किसी जातिगत एडजेक्टिव की बात है या ये सुप्रीम परमार्थ का एक द्योतक है। ब्राह्मणवाद तो हो ही नहीं सकता। ब्राह्मणिकल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह इट इज योर जर्नी टुवर्ड्स द सुप्रीम ट्रूथ, दोज एब्सोल्यूट रियलिटीज, उनका तरफ जाने की प्रक्रिया ही ब्राह्मणत्व है। उसमें कितना तप लगना है कि देयरफॉर not everybody can be a brahman, it cannot be a jati in the sense of being a caste। समझ में आया ना। तो ये जो वो कहती हैं, अब मैं कैसे समझाऊं, ब्राह्मण कह रहा है कि मैं वह ब्राह्मण नहीं। द ब्राह्मण हिमसेल्फ इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कास्ट ऑफ being to which a brahman is said to belong। यह चेतना एक ब्राह्मण लेखक में आ रही है। जरा आप दलित क्रिटिक्स की तरफ जाइए, अगर उसमें भी बाबूराव बागोल, दया पवार को आप पढ़ें, शंकरराव निम्बाले को, कुमार निम्बाले को पढ़ें, वो कहते दलित का अर्थ हर कुछ है जो दलित है और या कुछ भी नहीं है जो दलित है। इट कैन नॉट बी ए कास्ट सेंट्रिक कंसेप्ट। मैं नहीं कह रहा हूं, उनको पढ़िए जरा, कैसे उस एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंस को कास्ट सेंट्रिक किया गया। आपकी सारी जाति दलित थी, एक लंबे सैकड़ों वर्षों का विमर्श है जिसमें आपकी सारी भारत की जाति ही दलित रही। आपने उस दलित को कास्ट में डाला तो आपके सामने अनुसूचित जनजाति बना दिया। आपने जाति पर ही नहीं, आपने उसको जनजाति में कन्वर्ट कर दिया। और सुबह मुझे वो प्रदीप फौजदार मुझे मेरे पास बैठा था, वो कह रहा था सर ये आदिवासी हमारे कैसे हो गए, जो आपके भारतीय हैं, जो भारत के नागरिक होने चाहिए थे, आपने उन्हें वेस्टर्न गेज से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कन्वर्ट किया। और उनकी रेकनिंग थी और उनकी कॉन्शियसनेस पे एक सदा के लिए एक हिंदू द्रोह और भारत द्रोह का जो एक कर्टेन आपने लगाया। दैट फॉर योर, नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर द एनिमी ऑफ भारत टू मेक these SC, STs, OBCs realize that for your position the responsible people are the Brahmins or the Savarnas. Look at this. How convenient has it become? Our goal was to create a kind of consciousness of being Bharatiya, you know, चाहे आप उसे हिंदुत्व कॉन्शियसनेस कहें, चाहे आप भारतीय सनातनी कॉन्शियसनेस। हमने क्या किया, हमने सारे एजुकेशन सिस्टम को वी मेड इट एन अपेंडेज एंड अपेंडिक्स टू अवर कास्ट कॉन्शियसनेस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी में ये एक बात, आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी में हम जरा सुभद्रा कुमारी चौहान का भी स्मरण कर लें कि उसने कौन सा बसंत आपके लिए सोचा था कि यह बसंत, ये सर मोबाइल किसका, हाँ बस में मोबाइल आपका, आई एम सॉरी, बड़ी चक्कर है, द मोस्ट इमोबाइल पीपल कैरी मोबाइल। तो मेरे जैसे ऐसे जड़ लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते। तो आपको मैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये व्यथा है मेरी भी, क्षमा जी की, अल्पना जी की भी, इस सम्मानित मंच की, सम्मान नहीं मंच की व्यथा है। सुभद्रा कुमारी 1940s में एक्सप्रेशन दे रही, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा राणा ताना ताना का कर घमंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, तानाजी राणा सांगा राणा प्रताप का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंद, वीरों का कैसा हो बसंत, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी। सब कुलपति महोदय हमारी बैठी है, क्षमा जी, सबकी कलम बंधी है, मुक्त नहीं है। सा विद्या या विमुक्त ही होना चाहिए था। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ऐसा बसंत होना चाहिए था हमारे ज्ञान का, जो मुक्ति परक होना चाहिए था। जो हमारी विद्या कैसी होनी चाहिए थी, ज्ञानकरी होनी चाहिए थी, ज्ञानकरी टुवर्ड्स नॉलेज,
क्षेमकरी, कल्याणपरक होना चाहिए था। क्रियाकरी, कर्मपरी होने चाहिए थे। वो कर्मकरी वो एक्टिवाइज करती हमको, प्रोएक्टिव बनाती हमको। हमारी विद्या ने हमें, ज्ञान ने हमें स्कॉलर बना दिया, जड़ बना दिया। जा ज्ञान दे पा रहा, हम अपनी जड़ता में धंस गए। तो जो मुक्तबोध की कविता है, अंधेरे में, अंधेरे में वो शब्द याद कर लीजिए, मर गया देश जीवित रह गए तुम, अब तक क्या क्या किया, करुणा के दृश्यों से हाय मुख मोड़ लिया। धंस गए अरुण, धंस गए स्वार्थों के टेर यार, कुत्तों को पाल लिया। स्कॉलरशिप, कितने स्कोपस इंडेक्स, हमारी कुलपति महोदय, उनको रिकॉर्ड देना पड़ता है कि हमारे स्कॉलर्स का कितना स्कोपस इंडेक्स जर्नल। शिक्षा मंत्रालय, आपने क्यों नहीं कहा कि उसने भारतीय संस्कृत और दर्शन में कितने, राजस्थान विश्वविद्यालय का शोध पत्र क्यों नहीं स्कोपस इंडेक्स जर्नल के समकक्ष है? एक प्रश्न है। उसमें वो शोध पत्र हमारे बच्चे भारतीय दृष्टि से लिखें और उनकी वैधता सबसे पहले हमारे राजस्थान में हो, फिर भारत में। नहीं तो मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, एंटायर फील्ड ऑफ रिसर्च इन लिटरेचर एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज is full of parasitism, where the young scholars, young minds are being only relegated or forced to subscribe to those sharks of publishing industry. They want 6,000, 7,000, 17,000 rupees for publishing your papers, and then you get invited to an interview, and then you get selected. Now, if this is the Indian knowledge tradition, then जो टी.एस. इलियट ने कहा था ना, मैं उसको बस कह के और मैं अंत कर रहा हूं कि इलियट ने 1920 के दशक में वो कौन सा आपको वार्निंग दी थी, जो वहां का सबसे बड़ा कवि था, जरा उसकी आप जरा देखिए। ये एक, where is the life that we have lost in living? Where is that life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is that knowledge we have lost in information? This is 1921, T.S. Eliot. We are constantly losing our hold on Jnana, and our Bharatiya Jnana may be having all kinds of perspectives, and then for all kinds of perspectives, we have also all kinds of imperatives. But the correlation between these imperatives and perspectives has got to be screened, has got to be distinguished, has got to be analyzed through vivek and tark. Otherwise, most destructive perspectives will come with their own imperatives, and they would be normalized and neutralized as the new normal of Bharatiya Jnana. बहुत बहुत धन्यवाद आपके।